My topic is application of open source software in academia. As we all know that open source software, that's a software for which the original source code is made freely available and may be redistributed and modified according to the requirement of the user. So anyone can manipulate and change a piece of software so that the program or application can work. And programmers who have access to a computer program, that source code can improve a program by adding some features to it or by fixing some parts that don't always work correctly. As we all know that education is vital and it enriches our life, sustain our community, and help us grow into the future. So we have at least the idea that education, we all know that is failing millions of around the world. For example, a bright kid, but the education he is getting is totally outdated due to the cost of the latest book and materials. This situation is replayed in school, colleges, universities all around the world. So much for the education for all. But so how can we fix these things here? So the answer lies in open education. Open education is global movement that aims to bring quality education to the teachers as well as to the students everywhere. And the basic idea is to put top-notch learning material on the web so that anyone can access freely. You see, unlike textbook, some web resources can always be revised. So they never out of date. Shows the difference between some closed versus open source software that in a open source we have a user can get the source code there क्योंकि वहाँ user को source code जो है वो पता होता है. Closed sources में we have totally depend on the developer side there. वहाँ डेवलपर को पता है कि क्या चेंजेस करनी है, हाउ टू स्टडी ऑन इट देयर, किस तरह उसमें करना है. ओपन सोर्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं लाइक यूबंटू, रेड हैट. क्लोज सोर्स में वी हैव लाइक विंडोज एनटी, विंडोज विस्टा. एग्जांपल जो हमें ये बता रहे हैं कि क्लोज सोर्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है एंड ओपन सोर्स में हमारे पास क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो मोस्ट फेमस हमारे पास जो हम लोग एजुकेशन सेक्टर में यूज करते हैं. सो वन ऑफ द ओपन सोर्स इनिशिएटिव दैट कि हमें ये चाहिए कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए टुवर्ड द इनोवेशन इन द हैंड्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ताकि वो फोकस कर सकें अपने टाइम को ऑन अचीविंग देयर मिशन एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन. सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ ओपन सोर्स मेरी नज़र में दैट इट्स लेट यू कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी देयर. आप उससे खुद कंट्रोल कर सकते हैं. बता रहे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की वी हैव अ डेवलपर देयर एंड इट रन अ कंपाइल प्रोग्राम देन इट पुट इनटू द सम यूजर साइड और वो डेवलपर को देगा, वो उसको इम्प्रूव करेगा सोर्स कोड को और फिर वो वर्ल्ड वाइड जो है वो अवेलेबल होगा फॉर vastly improved there. Open source is an approach that we all know to the coding and creating software. और वो क्योंकि फ्री भी है एंड दैट इज नेम सजेस्ट दैट डिनोट्स अ कोड जो कि हर एक के लिए ओपन है, हर एक उसको अडॉप्ट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बाय एनीवन. यू कैन आल्सो एग्जामिन इट कर सकते हैं, आप उसको लर्न कर सकते हैं. यू कैन चेंज द पर्पस ऑफ इट देयर, इवन शेयर इट अमंग देम. दिस अप्रोच से हमें फायदा क्या हो रहा है? इससे सबसे बेस्ट फायदा ये हो रहा है कॉस्ट सेविंग. And but it is the ability to play with the software और आपको मौका मिल रहा है कि सॉफ्टवेयर से आप प्ले कर सकें जिसके थ्रू हमें बहुत सारे बेनिफिट्स अचीव हो रहे हैं. मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वी ऑल नो दैट आर फ्री देयर बट बोथ रेफर टू डिफरेंट टर्म्स देयर. फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट द प्राइस. So that means the freedom to run there. And next freedom is to study how program works there. And then we redistribute the copies and modify it or improvise there. Advantages of open source software that refers to the availability of the source code availability. Source code to understand and learn from, and do not have to reinvent the wheel there. So free as in freedom there. You are all free to customize the code or do your own requirement, fix the bug or flaws directly or by choosing
how much of the development work you want to outsource to free up the capacity for more customers that really focus on the activity side. So all in one, that open source not only promotes creativity but actually help make technology more democratic, allowing a community to work together to solve some common problem. Does not depend on the vendor that can choose additional support there, can fix bugs, adopt to change in requirement as well as the technology. So quality and customizability in open source is better. So cost much less than proprietary counterpart, as we all know. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एकेडमिक्स जिस तरह से आजकल नीड चेंज हुई है डिजिटाइजेशन के हवाले से, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी में हम मूव कर रहे हैं, खासतौर पे इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ कि हमें अपने गैजेट्स को किस तरह से यूज़ करना है। इंटरनेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया, हमें अपने गैजेट्स के यूजेस समझ में आया, सॉफ्टवेयर के यूजेस समझ में आया, और उसमें फिर प्लेटफॉर्म सामने आया जो कि वाइडली अवेलेबल था, वो ओपन सोर्स के हवाले। Some corporations and academic institutions have joined forces to further explore the potential for digitizing education through virtual universities here. Virtual University of Pakistan ने बहुत इसमें एफर्ट की। They develop the learning management system and they distribute among the universities through the HEC. कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ऑनलाइन कोर्सेज रन कर रही हैं, एजुकेशन पोर्टल जो है रन कर रहे हैं, इसी तरह से कोर्सफेयर जो है हमारे सामने है। Open source software and its impact on learning, that it provides a balance between resources and requirements, and open source e-learning software has emerged as a viable solution. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल have opted for the open source learning management system. जिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया प्रोग्रामिंग के लिए, नेटवर्क सिमुलेटर्स के लिए, हार्डवेयर डिजाइनिंग के लिए, टू कंटिन्यू दिस टीचिंग प्रोसेस ऑनलाइन। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए। सम ऑफ द बिगेस्ट आर लिस्टेड हियर, दैट लोअर द टोटल कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप देयर, आपकी ओनरशिप की कॉस्ट कम हो जाती है, बर्डन कम हो जाता है। ग्रेटर लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहाँ आपकी लर्निंग जो है वो इतनी नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बहुत कट डाउन हो गई। कस्टमाइजेशन सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा मूडल जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सिखाए, जिसको हम अपने एंड से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक। So all students benefit from better quality tools at lower cost here, and brighter students are given access to the tools related to some programming, scientific or research oriented that would cost hundreds of pounds bought from proprietary vendors here. So the natural curiosity of the student is therefore encouraged rather than being stifled, and they are free to pursue their love of learning there. So IT costs are lowered because there is no need to pay costly license fees. So software is not completely free because training, support, and staff to administer it are all needed. So there are plenty of organizations that whose business is to provide that support there. So ongoing costs are much easier to predict and less frequent. तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से हैं, कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कुछ ऑफिस सूट के तौर पे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अकेडमिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, कुछ डेटाबेस के हवाले से, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग। देयर आर वास्ट वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरीज दैट आर अवेलेबल ऑन द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जिससे अकेडमिया इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत बेनिफिट ले सकते हैं और ले रहे हैं। जो हम अकेडमिया में ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अपाची, माई SQL, PHP, Moodle, वर्डप्रेस,
LaTeX, Joomla, Linux, Sakai. These are different. As a learning management system, हम सबको पता है कि इसकी नीड जितनी इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें पता चली, इससे पहले इतना इसको हम खास तौर पे अपने पब्लिक सेक्टर में इतना फोकस नहीं कर रहे. तो even our university, like Karachi University, is now moving toward the learning management system, जो कि हमें HEC के through हमें model based जो learning system offer है. Because we have 44,000 students in Karachi University and about more than 5,000 employees here. The most common use of LMS software is to deploy and track online training initiatives. Typically, assets are uploaded to the learning management system, which makes them easily accessible for remote learners. So Moodle is most common example there related to the learning management system. The course management system that required Apache, some PHP and MySQL. It can be used for one teacher as well as for the entire university. This is another Tremolo open source LMS that here you can improve access to the education. OpenEdX is a tool to empowering learners to access course content, including videos and textbooks, while checking their progress in the course. Another broader area in academics related to the open source market there is the library management system. The library management system that basically is a software that's built to handle the primary housekeeping function of a library. So libraries rely on library management system to manage assets collection as well as relationship with their members here. ताकि वहाँ आप इजीली स्टूडेंट और जो स्टाफ है उससे रिलेटेड चीज़ें आप मैनेज कर सकें. तो जो मोस्टली हम यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट इज कोहा. हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी में कोहा यूज़ हो रहा है. Koha जो है that is world best open source library automation software that's used by over 3,000 academic, public and special libraries around the world. Koha has all the modules you would expect the full function library software like acquisition, serial, some circulation related cataloging, report and tools. Evergreen और एक और open source integrated library systems है that worldwide approximately 1,800 libraries. It has all the modules you would expect in a full functional library software. This is another professional library management solution there with respect to the open source platform. लाइब्रेरी के हवाले से जो है वो हमारे पास कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, जो खास तौर पे एकेडमिया सर्कल में कि जो आपकी मैनेजमेंट साइड है उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती. उन्हें सर्वर साइड पे प्रॉब्लम होती है. अगर आप यूबंटो पे सर्वर रन कर रहे हैं तो उसकी उनको ट्रेनिंग नहीं होती है सॉफ्टवेयर की, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह ना होने की वजह से वो प्रॉपर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते और उसको वो यूज नहीं कर पाते. So we have different challenges that experienced by libraries when adopting an open source software. These barriers include fear of the unknown, some lack of technical ability, कुछ कॉस्ट की वजह से, कुछ सिक्योरिटी की वजह से. Open source software में there are supports and maintenance costs they are incurred. Institutions should be prepared to meet these costs, and however the total cost of the ownership that depends on the software that is being considered as well as the staff expertise to install and maintain the software there. So it is also important for the library personnel to have the technical know-how of the design architectural component of the software. So therefore, open source software requires a great degree of computation responsibility. And and despite of these challenges, there are a number of solutions that are available जो कि उसको facilitate करते हैं. So librarians जो है खास तौर पे उनको ट्रेन होना चाहिए by expert of the system. अच्छा, आपको जो प्रॉब्लम्स हुई, आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की उसमें जो प्रॉब्लम हुई उसको आपने किस तरह हैंडल किया, ये सवाल है बाबर साहब का.
सर उसको इसी तरह हैंडल किया कि जो हमारे पास जो टेक्निकल स्टाफ था ना, जो वो ज़्यादा इतना स्किल नहीं था और ना इस सिचुएशन से अवेयर थे इससे पहले कि भाई हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाएंगे, या हम जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को जब अडॉप्ट कर रहे थे उस वक्त भी रिलेटेड टू द कोहा एंड द सर्वर साइड देयर। तो उसमें हमें फिर उनको ट्रेन करना पड़ा और उनको ट्रेनिंग दी हमने। ट्रेनिंग देने के बाद जो है दे आर नाउ मच प्रिपेयर्ड कि वो किस तरह यूज कर रहे हैं। तो बात मैं यही कर रहा था कि एकेडमिया में जो एडॉप्टेशन है ओपन सोर्स की, वो ग्रेजुअली अब उस बढ़ रही है और उसकी नीड भी जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली सबसे बड़ा बेनिफिट तो कॉस्ट का है, कस्टमाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो अभी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया इस पेंडेमिक सिचुएशन में, चाहे वो ऑफिस ऑटोमेशन के हवाले से हो, चाहे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से हो, चाहे इम्पोर्टेंटली लाइब्रेरी मैनेजमेंट से, तो अब पीपल आर रियलाइजिंग, स्पेशली इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के ओपन सोर्स की तरफ हमें जाना है, क्योंकि उसमें हमारी जो है वो कॉस्ट भी हमारी काफी सेव हो रही है, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी तो हमें जो है हर जगह पे जो अगर प्रॉपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें ओपन सोर्स के हवाले से जो एकेडमिया को नीड है, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो उसकी अडॉप्टेशन हो पाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आया है तारिक उबैदुर रहमान साहब का। विच ओपन सोर्स ईआरपी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट मैनेजमेंट, कैश फ्लो फोरकास्टिंग, पेरोल एंड एचआर एटसेट्रा इन योर यूनिवर्सिटी यू आर यूजिंग? इस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हम लोग कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे, और बाकी अभी एलएमएस सिर्फ हो रहा है पढ़ाने के लिए खाली, और लाइब्रेरी के लिए। जी आ रही है बात। जी जी। कि फाइनेंशियल सेक्टर पे अभी हम कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे, कोई एक ओरेकल बेस्ड जो है वो हमारा सिस्टम है वो हम यूज कर रहे हैं।